Go with it, man. Go with it. वो मैं बोल दूंगा. Just give me a 3-second cue when we are starting live on YouTube. We are back again, everyone, and we apologize. There was some technical issue, but it has been quickly fixed up, and we are looking into the match of GE Phoenix with Team Purple. Purple abhi defense side pe, they're actually down 5 rounds, but finally they're actually deciding to invest into the lockdown ताकि वो एक side clear in कर सके. They're still trying to somehow get those people out. Them have been detained and they will be taken down. There we go with the blade storm. They've taken one out of the picture, and this is going to be a massive big chungus. Not at all so will finally be taken down, but सारी information अपनी टीम को दे दिया उन्होंने. They know that the remaining 2 players are just locked in A main. They will be able to take them down one by one. फिलहाल रोज 2 trades निकालती हुई double swing आता हुआ will not be able to finish them off. At the end of the day, it is going to be the first round Team Purple have secured, but insane lockdown. Insane lockdown and an insane like strategy gameplay जो हम लोग बोल सकते हैं वो हम लोग को देखने को मिल पाया from the side of Purple. 3 players where we gonna see the muffin loop, you can say the disaster, the beast को वो लोग डिटेन किए जिससे उनको एक एडवांटेज मिला एंड then they fragged out the 3 of the detained players and then the rest of the 2 players has been fragged out. बहुत ही बेहतरीन राउंड हम लोग को देखने को मिल पाया इस मौजूदगी पर. देखने को मिल पाएगा कि इसके बाद वाले राउंड को कैसे करके एग्जीक्यूट करते हैं. मफिन लूप डैश जरूर ओपन करेंगे, उनके सामने 2 प्लेयर्स रहेंगे, मिड से जरूर पुश किया जाएगा, क्वीन जरूर पिक करेंगे, स्टन इस्तेमाल किया जाएगा, स्टन जरूर किया जाएगा, उनके बैक साइड पे जरूर और एक प्लेयर है. दूसरा फ्रैग एंड बिग चांस उनके सामने जरूर मौजूदगी रखेंगे. तीसरा फ्रैग भी अपने हाथ में ले सकते हैं. दैट्स कमिंग मे बी अ एस 8 फ्रैग. तीसरा हेडशॉट के साथ साथ देखने को मिल पाएगा वो कैसे करके एग्जीक्यूट करते हैं. एमकेएस जरूर एक क्लियर करेंगे. चौथा फ्रैग एंड देखने को मिल पाएगा कि वो कैसे करके अपने हाथ में वो एस लेते हैं एंड अपने हाथ पे वो बेहतरीन राउंड अपने खाते में 5 किल्स के साथ वो लेंगे. एमकेएस रेना का ब्लास्ट जरूर किया जाएगा बट नहीं, दैट वाज so close for a ace of muffin loop, but क्या मतलब that's a turning point, but नहीं. MKS that's a turning. MKS with the 3 frags कैसे करके एग्जीक्यूट करेंगे, उनके सामने जरूर पुश किया जाएगा बट नहीं. MU16 के उनको एलिमिनेट करते हुए 6वां जो है राउंड अपने हाथ में लेंगे स्केयर्ड. Absolutely insane play, literally insane play. The fragging coming in from the side of Muffin, it's just insane. The crosshair placement is absolutely perfect. The combination, जैसे कि B में उन्होंने hit करना था, they found out the position and then सीधा there was an aftershock and side by side we saw Jet dashing forward and Muffin picking him off. And backside pe, they kind of knew that there might be one person as well. The crosshair directly going in towards that backside, taking them out. It was such a picture perfect gameplay. And uske baad, their team provided the info and she just fragged off. So that was the play that might have been an ace. But again, that was a really good burst from MKS as well. क्योंकि 1v2 का सिनेरियो हो गया था. It could have been doable, but at the end of the day, it was just not enough time in her hands that she would be able to get the refuse in. But we will see. There we go. Smokes coming in, and they've actually got another side for free. Mew अपनी टीम को सीधा info देगी. Back side पे fight होती हुई. Will probably try and take them down. सीधा astral form में जाके एक और ऑफ वहाँ पे लगा दिया था. But has been taken out of the picture, but the trades are everywhere in favor of team GE and C side पे अब उन्होंने hold कर लिया है. They will be able to just get into an amazing after plant position 2v4 and it's going to be Purple in another disadvantage and the final 2 players will be shut down as well. 7-1 halves and we've still got a few more rounds remaining. बहुत ज़्यादा दिक्कत यहाँ पे आती हुई फिलहाल पर्पल के मेंबर्स को. They are not being able to get the read on the game plan that is coming in from G. So we have to see how they are actually going to get that read on their attacking plan because GE एक साइड पे जाके फेक करती है. They get the information in on the second one and then they go in for an attack on the third one. तो इस टाइप का प्ले जो उनकी तरफ से आ रहा है अगर म्यू इस टाइप से पिक ऑफ निकालेंगी
तो ऑफ कोर्स उनकी टीम को और ज्यादा प्रायोरिटी और लीड मिलेगी। फिलहाल अपोलो विल ट्राई टू प्ले नोज के डैश हुआ है, लेकिन बैक साइड से उनके ऊपर एक शॉट्स आए थे, उनसे सर्वाइव बिल्कुल नहीं कर पाई। यहाँ पे मटका क्वीन क्या कर पाएगी अपनी क्लासिक के साथ, कुछ वो देखना रहेगा। सिचुएशन बहुत ज्यादा मुश्किल है, फ्रेंजी उनके हाथ में अभी, तो देखते हैं क्या वो टेक डाउन कर पाती है। बहुत अच्छा स्प्रे यहाँ पे आता हुआ, कनेक्ट भी हुए थे शॉट्स, बट अगेन द गन डिफ कमिंग इन प्ले। अनदर राउंड फॉर ग्लोबल स्पोर्ट्स फीनिक्स। राइट। That's a amazing rounds. मतलब एक के बाद एक राउंड हम लोग को देखने को मिल पा रहा है जी के खातों में, एंड देखने को मिल पा रहा है कि वो कैसे करके एग्जीक्यूट करते हैं प्लेयर्स को, कैसे करके वो एलिमिनेट करते हैं। मे बी दिस टाइम वी गोना सी द अल्ट ऑफ अस्ट्रा, एंड लेट्स सी कि कैसे करके निकालते हैं इस राउंड को। 1-8 है, मे बी 9-3 पे कर्स का थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी बनता, बट लेट्स सी कि कैसे करके मैचेस को एग्जीक्यूट करते हैं। देयर इज अ चांस दैट दे कैन कम बैक स्टिल नाउ। पर्पल थोड़ा सा बैकअप साइड पे खेलेंगे, अस्त्रा मियो 16 के अल्ट का इस्तेमाल करेंगे, स्मोक का इस्तेमाल किया जाएगा, बट मफिन लूप रुकने का काम नहीं करेंगे। वो एट द बीस्ट, ऑन द बीस्ट यू कैन से, थोड़ा सा ये बनेंगे, बट थोड़ा सा यूटिल्स के साथ उनको एलिमिनेट किया गया है। मियो 16 के प्लान जरूर करेंगे। इसके साथ साथ इट्स अ सिचुएशन ऑफ 5v4, एडवांटेज पे अभी भी पर्पल की टीम जरूर रहेगी, बट मियो 16 के जरूर होल्ड करेंगे, बट नहीं, रोज के साथ साथ हाईफी दूसरे फ्रैग को लेते हुए अपोलो ट्रेड जरूर लिया जाएगा फ्रॉम द साइड ऑफ पर्पल। हम लोग को अल्टी देखने को मिल पाएगा, डिफ्यूज जरूर बैठेंगे, बट म्यू 16 के हैज बीन गॉन मैड, एंड उसके साथ साथ दूसरा फ्रैग एंड तीसरा फ्रैग के साथ साथ अपोलो अपना तीसरा फ्रैग कंप्लीट करेंगे एंड डिफ्यूज पे बैठेंगे। दैट्स अ क्लियर कट मैन अराउंड वी गोना सी राइट नाउ। स्केयर्ड, एक बेहतरीन क्लीन और इंटेंस मैच हम राउंड जो हम लोग को देखने को मिल पाया इस मौजूदगी पर। एब्सोल्युटली, बहुत सारी यूटिलिटीज यहाँ पे हुई थी इस्तेमाल। वी सॉ बोथ द कॉस्मिक डिवाइड्स गोइंग आउट एज वेल, एंड जी का कॉस्मिक डिवाइड वाज एब्सोल्युटली ग्रेट, क्योंकि सी साइड पे एक छोटा सा एरिया था जो कि उस वॉल के इस साइड पे था, एंड वहीं पे उन्होंने जाके प्लांट किया है। यस, स्पैम शायद हो सकता था, बट कोई साउंड क्यू वगैरह कुछ भी नहीं आने वाला था वहां पे, एंड दैट वाज एन एब्सोल्युटली परफेक्ट प्लांट कमिंग इन फ्रॉम देयर साइड। बट उसके बावजूद द आंसर वॉल दैट केम इन फ्रॉम द साइड ऑफ पर्पल, यू नो, वो वॉल अगर कोई भी पोस्ट प्लांट ऑफ साइड खेलने की कोशिश कर रहा है, उसको सारी इंफॉर्मेशन डिनाई करने वाली थी, एंड दैट पर्सन वुड हैव बीन फोर्स्ड टू जस्ट प्ले इनटू दैट लॉबी और प्ले ऑन साइड। एंड उसके बाद जो उन्होंने स्विंग्स लिए थे एंड जो ट्रेड्स लिए थे, वो एट द एंड ऑफ द डे उनके फेवर में जरूर आए, एंड दे वर एबल टू गेट दैट राउंड। इट वाज एक बहुत बढ़िया प्ले हुआ, एंड सीधा उसके रिटेलिएशन में एक और प्ले हुआ। यहाँ पे आशा स्मोक will not respect that smoke. No, she will just retreat back. Angle पे spam जरूर किया था, now that one angle is cleared. But उसके बावजूद they made noise on A again, and जैसे कि हमने बात करी थी, वो एक साइड पे नॉइज बनाते हैं and they rotate in towards the other one. तो देखना है क्या रीड सही रहेगा इस गेम के अंदर पर्पल का। They are actually sending in a couple of people on C side as well. But we are actually going to see the hit coming in. They've still got another side for absolutely free. Asha Smoke डिले करता हुआ उनके पुश को, एंड हाई पे ट्रेड्स यहाँ पे निकालते हुए दो को ऑलरेडी पिक ऑफ कर लिया है, एंड अगेन अ 3v5 सिचुएशन, मेक इट 2v5 as Muffin is not stopping. High पे with 3 in this round on that chamber, just making it work. And अभी तो अटैक राउंड चल रहा है, and that is going to be Tanisha picked off. High पे with 4. A flawless round from GE. That was a clear cut round हम लोग को पहले देखने को मिल पाया था फ्रॉम फिन लूप, एंड नाउ हम लोग को देखने को मिलता है वो हाई पे दो 4 फ्रैग्स के साथ, मतलब दो जो प्लेयर है 4 फ्रैग्स जो है हम लोग को देखने को मिल पाया फ्रॉम बोथ द राउंड्स। 2-9 का स्कोर जरूर स्केयर्ड हम लोग को देखने को मिल पा रहा है, जहां एक राउंड अगर पर्पल ले तो एक कमबैक का सिचुएशन बनेगा, एक कर्स का सिचुएशन जरूर बनेगा, बट लेट्स सी कि कैसे करके जी खेल रहे जैसे करके डोमिनेट करती है, तो थोड़ा सा दबदबा फ्रॉम द साइड ऑफ पर्पल देखने को मिल पाएगा। जैसे करके मैं बात करूं जी अभी तक जो जैसे करके खेल रहे हैं हम लोग, मुझे थोड़ी देर पहले जब जो किल बॉक्स है वो देखने को मिल पाया था, वहां देखने को मिल पाया था कि दो जो अस्त्रा है, क्योंकि अपेलो उसी राउंड पे क्लच निकाले थे, टाइप ऑफ क्लच निकाले थे, 3 फ्रैग्स निकाले थे, इसलिए हम लोग को देखने को मिल पाया था कि जो म्यू 16 के है एंड अपोलो है, दोनों ऑन द टॉप ऑफ द किल बॉक्स हम लोग को देखने को मिल पाया था, ऑन द टॉप ऑफ द MVP हम लोग को देखने को मिल पाया था, बट ड्यू टू लेसर राउंड्स यू कैन से कि लेसर राउंड्स पर्पल के पास है, तो थोड़ा सा दबदबा बुक फ्रॉम बोथ द साइड्स हम लोग को देखने को मिल पाया था। क्योंकि अगर मैं बात करूं स्केयर्ड
जी जैसे करके इसको स्ट्रैटेजी कर निकाल रही है, जैसे करके अटैक कर रही है फ्रॉम द साइड ऑफ मतलब फ्रॉम द साइड ऑफ अटैकिंग, दैट्स अमेजिंग। डिफेंड पे थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर बन रहा है, बट अगर एक राउंड अभी निकाल पाए, अगर वो एक राउंड अपने 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 नाम पे कर लेते तो वो आराम से इसको निकाल सकते हैं, आराम से जो है मैच को निकाल पाएंगे। व्हाट डू यू से? No, that's the strength of a double duelist comp. When you look into it, you have two people who can literally just fight on their own. So, उस चीज को अगर हम notice में रखें, so of course it kind of turns out that they have to play in aggressive. But as of now, the plan that they have been using for the entirety of this match, it has been they make noise at one side, they go on and head towards the other one, and that is something that Purple has not been able to read entirely. So there have been some problematic situations that they have been in, but even after that, when they actually got that read, they were not able to win their duels because all the angles of the rotation they were just held by the members of GE. So yes, उनको पता है कि अगर उनके opponents read भी कर रहे हैं उस situation को, तो भी वो उसके लिए already prepared है. They're just thinking one step ahead. But we'll finally be looking in towards the final round of this half. And we have got quite a few ults online. Filal Tanisha is not on the Hunter's Fury, but uske bawajood, we have been seeing another ultimates coming in from them. But even though we saw one clutch round with the Cosmic Divide, wo abhi available nahi hai. So they have to play along with the information as of now, and they are again making a quick in rotation towards that A. This might actually be a quick hit towards A. Because Blade Storm यहाँ पे use हो गया. Dash in has been used above Muffin, and there we go. Because with the 6 of them out, and जो rotation हम starting से देख रहे थे, उसको बिल्कुल ही change कर दिया है GE with an insanely quick hit towards A site, and just a weaponry on the ground. That's what happens when you are, so high in the economy. But the trade, Muffin takes Matka Queen down. Tanisha was able to finally trade Baila off and actually gets the second one as well on the Sheriff. It can be doable. अगर सारी 1v1s वो isolate कर दे तो will she be able to get this one out as well? Recon down gets them for the double swing. Finally, Muffin puts them back to the bed, and that is going to be another trade for GE, making sure that they are going in a 10-2 in the defense round, and they only need 3. However, this situation, how difficult it may be for Purple, there is still a chance to come back, and it starts right from this pistol. They have to get this one. Yes, and they have to make sure to get the second round as well. Bonus maybe. I personally feel like they might actually choose to invest. या मतलब बोनस में भी अगर वो लोग इन्वेस्ट करते तो एक अच्छा दबदबा बनता, बट इफ यू कैन से राइट नाउ दैट ऑन द अटैकिंग साइड वी कैन सी पर्पल maybe they gonna push directly, नहीं थोड़ा सा दबदबा गैरेज पे भी बनेगा. KJ going to garage, but Neo 16K still on a better position, get some frags, and इसके साथ साथ हम लोग को मे बी साइड देखने को मिल पाएगा. बट क्वीन की बात करो जरूर गैरेज के बाहर इंतजार करेंगे, बट पुश आउट जरूर देखने को मिल पाएगा. म्यू 16 के जरूर एक को निकाल पाते, बट नहीं एमके एक फ्रैग को निकालेंगे, उसके साथ साथ 2 फ्रैग निकालते हुए रोज and a double kill of Haife निकाल देंगे 4 players को from that out, and a single man standing on that behalf. And maybe on that behalf, it is difficult to clutch this round. It is difficult to clutch this round. Haife को जरूर निकाल पाए, but नहीं, मटका क्वीन जरूर नाकामयाब बनेंगे क्लच करने के लिए. बट या it's a nice try coming from KG. Honestly, the setup was just in a way that she would not have been able to do anything in that situation because there were 4 people on site. 3 of them actually went in for the swing. So even though she could have taken one out, बाकी 2 सीधा trade in निकाल लेते. So she was not in a situation to actually win that one. That was another good setup coming in from GE. And they basically read the entire plan that was from Purple. However, this round it is going to be a save for them, and the trade actually coming in way too quickly. And look at the swing! They gave a Spectre, they went in for the investment, and it is turning out to be amazing for their side, and C is absolutely free. Dobara say they've got the information, they've got the weapon upgrades as well, lekin trade is not in their favor.
Hype actually gets MKS down. अब देखना है मटका क्वीन कैसे इस चीज को खेलती है. They will get the plant in. They've got the plant in on C, but उसके बावजूद the trades coming One in. enemy remaining. It goes in favor of GE. It's a 1v3 scenario. लेकिन look at the HPs onto the hands of GE के members. Right, still a situation that he can clutch it out, she can clutch it out, but नहीं. इसके साथ साथ बेला जरूर डाउन करेंगे तनीषा को एंड राउंड अपने खाते में. Still as a analyst you can say scared. Reina from that side of purple shouldn't have pushed there, right? From that side of garage, like वो बहुत ही open side पे चले गए थे. That's chamber to get a clear cut frag, right? A clear cut headshot coming from high pay and वो थोड़ा सा the problem जरूर बना था, but how KJ fragged it out, how KJ got the 2 frags, the swing, that was awesome, you can say. Yes, that is absolutely correct. And honestly, they could have actually got that round in. That Spectre came as a surprise for GE. And they did not expect कि वो इस round में invest करे, but again, they did. But for now, they have to get this round because it is match point. It is 12-2 already. So they have to somehow get the win. They're going in towards the C, and that is going to be a quick hit. Utilities have been used up. They've caught in the gravity. MKS falls, but Tanisha trade निकालती हुई 2 takedown कर लिए हैं. They've got the chance. There we go. The flash play, absolutely perfect, and the touchdown comes in. There we go. Rose going in those trades. It's a 1-on-1 situation. Baila with the owl drone will try to grab the information, but the timing, okay, was not that amazing. Yet we still see. There we go. Shock dart missing the mark. Finally, it's gonna come back to this 1v1. Apollo gets that trade, but that's been so expensive for them. Dungeon has been so expensive. They only have one rifle to work with as of now. Yeah, you have said like क्या मतलब थोड़ा सा तो दबदबा बनेगा, but right now you can say that Muffin Loop on the top of the box, on the top of the match, on the top of the MVP, you can say 17 kills with a death of 7. Yeah, तो मतलब अगर मैं बोलूँ कि मैचेस कैसे करके एग्जीक्यूट करते हैं, तो मतलब पिछले जो राउंड में थे हम लोग को देखने को मिल पाया था कि वो कैसे करके जो है उस टाइम पे सोवा जरूर पुश कर सकते थे, बट राइट नाउ यू कैन से हाई फेक फ्रैग निकालेंगे और उसके साथ साथ मियो 16 के दूसरे फ्रैग को निकालेंगे, बट उसका ट्रेड जरूर रेना लेंगे. उसके साथ साथ एमकेएस दूसरा फ्रैग लेंगे, मफिन लुक को भी डाउन करेंगे, उसके साथ साथ हाई फेक जरूर एक फ्रैग लेंगे, उनको 1 टैप जरूर दिया जाएगा फ्रॉम द साइड ऑफ अपोलो, बट लेट्स सी कि कैसे करके अपने वैंडल शॉट्स निकालेंगे ऑन द साइड ऑफ वायला जरूर इंतजार कर रहे हैं, क्राउच के साथ निकाल सकते एंड दूसरा फ्रैग हम लोग को अपोलो के साइड से देखने को मिल पाएगा. राइट नाउ इफ यू कैन से दैट रोज स्टिल रिमेनिंग ऑन द बिहाफ ऑफ जी. दैट्स अ क्लियर कट मैच. अगर जी इस राउंड को निकालते हैं तो वो मैच को अपने हाथ में ले सकते हैं, अगर नहीं निकाल पाए तो उनको और एक राउंड जरूर खेलना पड़ेगा और मे भी अस्त्रा निकाल पाए क्योंकि उनके पास एक अल्टीमेट जरूर रहेगा. डिवाइड जरूर वो कर सकेंगे इस मौजूदगी पर एंड स्पाइक प्लांट करके एक अच्छे जो है जगह पे होल्ड करके वो मैच को जरूर एग्जीक्यूट कर सकते हैं. बट या दैट्स अ इंटेंस पार्ट, दैट्स अ इंटेंस सिनेरियो वी कैन से कमिंग फ्रॉम बोथ द साइड्स, फ्रॉम बोथ द फ्रॉम द टीम यू कैन से. रोज की बात करूं जरूर बैक साइड पुश हम लोग को देखने को मिल पाएगा. फैंटम का इस्तेमाल जरूर अभी करेंगे, उनके पास स्पेक्टर का इस्तेमाल जरूर कर सकते थे बट नहीं, वो फैंटम को जरूर ये करेंगे. अल्टीमेट जरूर अपेलो के पास रहेगा, मे बी द लास्ट राउंड, बट नहीं. दैट्स अ क्लियर कट कॉम्बिनेशन बट अ क्लच कमिंग फ्रॉम अपेलो. 3 फ्रैग के साथ जरूर अपेलो इस राउंड को क्लच करेंगे एंड एक और मैच पॉइंट की तरफ लेके जाएंगे स्केयर्ड. एंड इसी के साथ उनका कॉस्मिक डिवाइड भी अब उनके हाथ में आ चुका है एंड आई रियली डिड नॉट सी दैट कमिंग. GE they could have swung 3 at once, but even after that the fights were isolated. Apollo just took them out one after the other, and I really feel like that the aftershock that was used in towards the Sivers kind of gave out the position of the last member of GE. So it's a little bit problematic, I personally feel like, because अगर रोज थोड़ा और साइलेंस वहां पे रखती तो इट वुड हैव बीन ट्रबलसम फॉर अपोलो इन दैट सिचुएशन, बिकॉज उनको नहीं पता था कि रोटेशन किस साइड से आएगी. शी वाज जस्ट
holding that one specific angle because उनके पीछे से कोई नहीं आने वाला था. Everyone's gonna come in from the front. So I personally feel like Rose could have used that opening, but Aftershock was to clear that one entire angle as well as the whole of your Sivers. But that revealed the position, and uske according we saw Apollo adjusting and was able to finish her off. Yet they still have 8 more chances to actually shut it down. तो देखना है कि क्या Global Esports उसको finish up कर पाएगी, because we are going to see another full buy round coming in. Even after that, Purple can come back in this match. Just one step at a time is something that they need to do. The composition that they have is amazing for attack, but they need to keep on doing that. They need to win the duels that they have. They need to somehow end up getting that information. फिलहाल Mew will hold the garage and spam के साथ वो MKs को finish off भी करेंगी, but the trade comes in. Big Chunks finishes her off, and we're gonna see the smoke to deny the vision. Aftershock has been used up to clear the cubby, but no one is right there. There we go, another spam. Big Chungus reloading comes in. Tanisha with the follow up takes another member out. Only 5 HP at this point on hand, but it's a 2v2 scenario. Baila position. देखते हैं क्या वो trade निकालेगी. Crossfire setup. Queen wins the trade off. What? How was she able to win that? I'm still surprised. But Hype brings it down to a 1v1. Timing is everything that matters. Hype contact यहाँ पे weapon हाथ में नहीं. Oh my god, Queen was just going in for a rotation. She had no idea. That is so unfortunate for Purple. Oh. What a match! What a match it was! It was so like I cannot predict what's happened next, what's happening next, what will happen next, right? Well, Right. on the time of momentum, everything is changing. The way of playing, the aggressiveness, the calmness, we can say. But the way Muffin Loop played with the 19 frags, you can say that's awesome. That's brings out the play of a jet, of a normal, of a duelist, you can say. And the second upon, we can say the Haife with the 22 frags. Yeah, more than Muffin Loop, but we can say that the way she clutched the last round, that was beyond imagination. Yeah, something was beyond Queen, right? मतलब थोड़ा सा दबदबा या थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम जरूर बन चुका था क्वीन के लिए, बिकॉज शी वाज लास्ट मैन स्टैंडिंग एंड फ्रैग्स भी उतने ज्यादा नहीं थे, थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर बना था, बट या everything was good and the match was still at an intense part, right? It was a very entertaining match. That is absolutely correct. But somewhere I just want to put in forward the composition that we saw that came forth from Purple, including Astra as well as Jet and Arena. That was something that I felt like maybe they might not be able to get that mid round information. And that is exactly what the situation was. They were not able to get that mid information. जिसका फायदा GE हर बार उठा रही थी. After their early aggressive play towards one side, they knew that now Purple don't have the resources to know where the hit might be going. So they cut the noise entirely and then went in towards the other side. And this was the strategy they used on attack, and their defense was absolutely picture perfect. I really feel like that the last trade might have gone in favor of Matka Queen had she would have had the gun in hand. But at the end of the day, it was an unfortunate play for her. But again, a very well play from the entire team of Global Esports Phoenix. However, we still have one more match remaining, so you would not want to leave the stream. Make sure to stay here, hit that like button, click on the subscribe as well, click the bell notification so that you do not miss any of the upcoming videos. Join the Discord server as well as follow us on Instagram. You do not want to miss any kind of updates there as well. Make sure to stay tuned, guys. We will be right back in 5 minutes.
Welcome back, everyone. You all are watching WCS brought to you by Zest Esports. दो मैचेस हमने ऑलरेडी देख लिए थे. दोनों ही मैचेस में Global Esports have been winning it 12-4. Will the third team, that will be NYX, be able to break that curse, or will it be again Global Esports Phoenix with yet another win? We will witness that in the next upcoming matchup. And उससे पहले हम अगर बात करें पिछले गेम की थोड़ी सी डंजन, so that was another domination that came in front of us, and Yeah. that too in heaven. And this time जो वीटो हमारे सामने आएगा उसमें हमें पता चलेगा मैच मैप कौन सा होने वाला है. So are you expecting the same kind of result or maybe something different? So as you have said, like expecting, come predicting, like maybe domination हम लोग को देखने को मिले, right? Because the previous two matches of group one, हम लोग को बहुत ही बेहतरीन गेम प्ले देखने को मिल पाया from the side of Global Esports. Yeah, but a nice try to the opponents, because उन्होंने बहुत ही अच्छा एक जो है momentum बनाए थे, but yeah, their executions were not so good compared to G. That's why they lost their matches. But yeah, never give up is something you have to remember, right? You have to learn from your mistakes and come back harder and show your presence, show your dominance over the सबसे जो बाकी के teams है like Purple and the previous one Kunoichi, दोनों जो teams है they have played well, they had mistakes, they have to know their mistakes, they have to work on their mistakes, and later on they have to come back harder, right? Scared. Exactly. You either win or you learn. These are the only two things that we see in those matches. But उसके बावजूद अब हम देखेंगे कौन सा मैप हमारे सामने पिक होता हुआ हमें नजर आएगा. We're gonna witness what was the result of the veto, and we are going to have the match on Lotus. New map. I have been waiting to look at the lineups in this specific map. तो Dungeon आपको क्या लगता है? क्या रहने वाला है इस मैप का रिजल्ट? See, Lotus map hai, that's a new map for the both of the teams. They have played maybe Lotus some quite while, like क्योंकि Right. बाकी के जो maps है like Fracture, Pearl, they have banned it, right? And they have decided the map Lotus. So it's basically map where the teams are new, the map is new, the comps are new, the way of style they are playing is new, the lineups will be like new, you can say. But yeah, जैसे करके वो एग्जीक्यूट करेंगे प्लेयर्स, जैसे करके वो डोमिनेट करेंगे, वो ही डिपेंड करता है इस मैप के ऊपर. बट मैप, ये जो मैप है, दिस मैप्स आई थिंक फ्रॉम माय पीओवी यू कैन से it's a basically a map of rotation. It's a map of like time to time rotate करना. Lotus is a map of, you can say कि dominate के साथ साथ उसके ऊपर एक दबदबा रखना बहुत ही महत्वपूर्ण रखते हैं, क्योंकि वो तीन साइड से वो जो है पुशबैक मिलता है. साइड के जो एरिया है वो कम है कंपेयर टू अदर साइड्स, राइट? स्केयर्ड अगर मैं बात करूं आफ्टर द मैप, हम लोग अभी अगर थोड़ी देर के अंदर हम लोग जो है एजेंट सिलेक्शन मोड पे जाएंगे. अभी कुछ ही सेकंड्स के अंदर हम लोग को देखने को मिल पाएगा एजेंट्स. व्हाट डू यू थिंक, व्हाट एजेंट्स दे गोना सिलेक्ट? Honestly, I am really expecting a Viper Harbor combination, क्योंकि हमें पता है Harbor as a new agent जब रिलीज हुआ, he was not a fan favorite, उतना ज्यादा यूज नहीं होता था, but people have started to adapt, using that hero, not exactly as a replacement for Viper, but more or less like in a combination with her, because हमें पता है वाइपर वॉल जब डाउन जाएगी तो उस टाइम यू हैव अ यूटिलिटी ऑफ हाई टाइड. आप सीधा उसे लगा दो, यू आर डिनाइंग द विजन टू योर ओपोनेंट. जब हाई टाइड आपका लो जाता है, देन आफ्टर दैट यू स्टिल हैव द टॉक्सिन्स अप फॉर वाइपर, तो वो वॉल वापस ऊपर जाते हैं. यू स्टिल डिनाई अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन टू योर ओपोनेंट्स. And when both of them are down, you have your cascades. उससे आप सीधा एक एरिया भी क्लियर करते हो. You deny the vision. You have so much utility with a harbor along with the cove. We know that it becomes so very easy to plant when there is a cover of cove around you. So these are the things that I probably want to see in this specific map as well. And we are seeing the harbor being brought up by Team GE Phoenix, who will be on the attack side on this Lotus map, while NYX on the defense side
They're going with the Viper, Omen, Killjoy, Breach, as well as the KO. We're gonna see KO after a lot of time. While on the counter hand, we're seeing GE Phoenix with Jet, Cypher, Breach, Neon, as well as the Harbor. I am liking this composition. Cypher is one of my favorite Sentinels, and looking him coming back in this map, it makes me feel so happy. Yeah, I totally agree with you, Scared. But Omen and Lotus maybe kind of lack in between, right? Maybe lack, you can say, yeah, smoke इस्तेमाल जरूर इस टाइप पे कर पाएंगे, but yeah, the composition they choose to as a like as a global esports you can say कि उनके पास हार्बर है. जैसे आपने बताया प्रीवियसली कि हार्बर एज अ एजेंट वेयर वी कैन से दैट कि हाई टाइट लो टाइट का एक जो है कॉम्बिनेशन हम लोग को देखने को मिल पाता है ऑन द बिहाफ ऑफ म्यू 16 के जो है हम लोग को देखने को मिल पाया था नियॉन. बट राइट नाउ वी हैव फेस सम ग्लिचेस राइट नाउ, maybe a timeout because yeah, technical timeout you can say. Yeah, थोड़ा थोड़ा टेक्निकल टाइम आउट होता है बिकॉज यू कैन से कि yeah, it's a game, it's a technology based thing, right? टाइम आउट होगा मे बी 2 मिनट 3 मिनट का टाइम आउट होगा एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू आवर मैच. टिल देन स्केयर्ड व्हाट डू यू से कि मैचेस कैसे करके एग्जीक्यूट करेंगे एंड मैचेस पे कितने ज्यादा इंटेंस हम लोग को देखने को मिल पाएगा? I mean, जिस टाइप का कॉम्पोजिशन अभी देखने को आया, सो आई एम एक्सपेक्टिंग द सेम काइंड ऑफ एग्रेशन जो कि हमने अभी तक जी की तरफ से देखा है. सो बट अगेन, लोटस एज अ मैप, it's a very big map. Like, इससे बड़ा मैप I personally feel like is only Breeze. So even after that, we've got this map and there are 3 sides to hit. Of course, it is highly possible that they will be rotating in those sides, but I possibly feel like that most of the hits they might end up towards the A, or they might fake towards the A and go directly to C. जो चीज हमने हेवन में देखी थी, it is highly possible that GE can also reciprocate the same thing and they might actually do the exact same strategy in this specific map as well. But again, these are all speculations because NYX, they can also answer back. They've got an amazing composition for as well. They've got some amazing picks, and the way that these teams play on these maps is, I wouldn't exactly say similar, but they've got their own unique style that comes in front of us. But we're going to see the agent selection back up again in front of us, and it is going to be almost the extremely same composition from both of them: the Omen, KO, Breach, as well as Viper and Killjoy. And on the other hand, we're seeing Cypher, Jet, Breach, Neon, but it is possible that they might not lock in Harbor. The technical issue that we had has been fixed up way too quickly. Kudos to management and production. But as of now, NYX is the team who might be in the pressure. Don't you think, Dungeon? Might be because the agent selection we have to, like we have told before is the same, right? Omen on the side of defending, KJ on defending, and Viper also in the defending. You can say, as we have said before, the lineups, the comps we have just said before is the mystery of this map because इस पे जो हम लोग को डिपेंड करता है कि मैचेस कैसे करके एग्जीक्यूट करेंगे कॉम्स वगैरह के ऊपर. बट ब्रीच, आई एम शॉक बिकॉज ऑफ ब्रीच, बिकॉज ब्रीच एक ऐसा एजेंट है जो लोटस मैप पे इतने सारे साइट है तो उसमें वो ब्रीच जो है वो क्या बोल सकते हैं उसको डिफेंड, अगर मैं बोलूँ तो डिफेंडिंग में ज्यादा काम आएगा एज टू गेन सम टाइम, जिससे बाकी के जो प्लेयर्स है फ्रॉम द साइड ऑफ बी और सी और ए वो फटाफट से अपने जो टीममेट्स को है वो हेल्प करने आ जाएंगे. तो आई होप दैट इन द मैप ब्रीच is the agent which gonna dominate. Maybe it's a prediction, I don't know, it's from my POV, but let's see कि साइफर कैसे करके निकालते हैं एंड लेट्स सी कि कैसे करके मैचेस को एग्जीक्यूट किया जाएगा. बट बोथ द साइड हम लोग को ब्रीच जरूर देखने को मिल पाएगा. इसका मतलब एक क्लियर कट कॉम्बिनेशन, एक क्लियर कट मैच, एक क्लियर कट इंटेंस मोमेंटम के साथ इस मैच को एग्जीक्यूट करते हैं. कौन सी वो जो टीम है वो निकाल के जाएगी, बट लेट्स सी केयर कि मैचेस के अंदर क्या होगा, कैसे करके प्रिडिक्ट होगा. थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर बनेगा क्योंकि दिस इज काइंड ऑफ अ न्यू मैप. मोमेंटम स्ट्रैटेजीज अलग अलग है, स्ट्रैटेजीज पे एग्जीक्यूट करना भी थोड़ा सा दिक्कत देगा. बट लेट्स सी कि कैसे करके मैचेस को एग्जीक्यूट किया जा सकता है. You're absolutely correct on that analysis, and as just you've said so many times, I mean,
the amount of rotations in this specific map, there are so many opportunities that you can fake onto a side, move on to the other one. But for now, we're gonna quickly move and look at how things are going to turn out. As we can see, GE making rotation towards the rubble, opens the door, goes into tree, clears the angle, and अब उनके पास पूरा tree का control भी हो चुका है. They probably might be able to take them down, but नहीं. Mew was overwhelmed by the defenders, and that is going to be Burrito taking 2 finishes. That has been Right there. an insane play coming in from their side. And that was a very solid defense as of now. But again, Muffle, just as we know, she's been playing absolutely beast in this specific map. And this is exactly what they're doing. Overwhelming KJ there. Anya picked off. Smoke coming in. Was not a one-way smoke as of now, but Muffle still sitting in the smoke. And just as we were talking about, rotations being made up, spike has been planted. Right. Spike has been planted and let's see कि कैसे करके इसको execute करते हैं. But बायला and हाइफे दोनों को डाउन किया जाएगा ब्रिज के साइड्स पर. But still मफिन लूप दोनों फ्रैग्स जरूर लिए थे. तीसरा फ्रैग्स अपने हाथ पे ले सकते थे. तीसरा फ्रैग, चौथा फ्रैग ले सकते थे. But that's the third frag and the fourth frag you can say from the side of breach. Scared. What's a gameplay coming from the breach side? That's a great gameplay coming from breach. What do you say, Scared? That was insane. Just as you mentioned, that was a great map point, and that was an amazing setup, to be honest, from their whole team. The way that they played right from the beginning, tree control उन्होंने दे दिया था सीधा. उन्होंने tree को बिल्कुल control नहीं किया because they knew that after the door closes, GE will have absolutely no way of running away from that, because door जब open होगा तो हल्का सा time लगेगा and you would expect from where the rotations might come in. And उसी चीज का फायदा उठाते हुए NYX winning that round number 1, a very good start from their side. And this is probably the first pistol जो कि हमने अभी notice किया है that has not gone in the way of G Phoenix, and this might actually sound an alarm. तो अब देखना है कि इस round के अंदर they're bringing all 5 specters on their hands as of now, कैसे वो चीजों को turn around करने वाले हैं, because this is going to be an important round for NYX. अगर वो इस राउंड को जीतते हैं then of course they will have that momentum. But अगर यहाँ पे एक 50 निकाल लेती है टीम GE, so in the next round they will be the ones who will be having a better buy, and that will put them in the lead in a possibility of a lead for the next round. But as of now, you know, KO जो कि हमने उतना ज़्यादा यूज होता है नहीं देखा, she will have a lot of responsibility on her shoulders, because those suppression knives as well as the no command will be the cue for NYX to actually go in for more, and mid-round information उनको उससे ज़रूर मिलेगी. But the composition that they brought, the double controller composition, it's something that I've been waiting for a long time, और जो कि अब हमें होता. या जो मैचेस है हम लोग को बहुत ही बेहतरीन देखने को मिल पा रहा था इस टाइम से, एंड अभी भी देखने को मिल पाया. दिस इज द फर्स्ट मैच जहां हम लोग को देखने को मिल पाया कि द टीम डोमिनेट द पिस्टल राउंड्स, मतलब एलिमिनेट करके वो पिस्टल राउंड को अपने हाथ में जो है अपने खातों में लिया है, ओनली बिकॉज ऑफ द ब्रीच अगर मैं बोलूं तो. बट राइट नाउ इफ यू कैन से अबाउट द ब्रीच कॉम्पोजिशन, एंड यू कैन से प्रीवियसली कि KO थोड़ा सा प्रॉब्लम बनेगा, बट द डिटेक्शन इज काइंड ऑफ ओके, एंड मफिन लूप विद अ शेरिफ मे बी पुशिंग द साइड. लेट्स सी कि कैसे करके एग्जीक्यूट करते हैं इस राउंड का, एंड देखने को मिल पाएगा कि कैसे करके वो एग्जीक्यूशंस को निकालते हुए प्लांट करेंगे एंड उसके साथ उसको कवर अप करेंगे. नहीं, एज आई हैव सेड बिफोर, इट्स अ रोटेशन मैप, तो प्लेयर्स जो है थोड़े से बिखरे हुए हैं. जहां भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा वो एलिमिनेट करेंगे जरूर, वो मफिन लूप रोटेट करने का इस्तेमाल जरूर करेंगे. Mio 16K with the Sheriff still holding the side. Maybe they're gonna push, but yeah, they're lacking between the comms because Oh my god. Yeah, they're just not pushing right. The way defenders gonna defend the map is so good, and the frag is so hard. Anya, what a frag! The second frag of Muffin Loop, and the third one. Rose, what a gameplay coming from you, That was awesome.
That's a situation of 2v3. Let's see कैसे करके निकालते हैं जी इस मैच को, क्योंकि उनके पास बस 2 एजेंट्स बाकी है. रोज इज नाउ प्लांटिंग एंड लेट्स सी कि कैसे करके वो एग्जीक्यूट करते हैं अपने मैच को. बट लेट्स सी कि कैसे करके इस एग्जीक्यूशन के बाद इस प्लांट को होल्ड करते हैं एंड कैसे करके वो जो डिफेंडर्स है इसको डिफ्यूज करके अपने हाथ में द सेकेंड राउंड लेंगे. बोथ द साइड स्पेक्टर जरूर मौजूद रहेगा एंड देखने को मिल पाएगा कि वो कौन सी जो टीम है वो कैसे करके निकाल सकते हैं. बायला स्टिल होल्डिंग ऑन द सैंड ड्यूक में भी कैसे करके एक पीक जरूर देखने को मिल पाएगा. बट ब्रीच का स्टन they dodged it. Shinobi still diffusing the map. Kyoto, what a gameplay coming from. Baila जरूर एक प्लेयर को लेंगे बट बायला still can't deny the diffuse. What a round it was. Scared. NYX just not stopping. सारी यूटिलिटीज माउंट के ऊपर उन्होंने डाली है. दे न्यू के ऑफ साइड ही खेला जाएगा. सी पे एक ही जगह मेन प्लांटिंग लोकेशन रहती है एंड उसके बाद सारी टीम्स ऑफ साइड ही खेलती है. एंड दिस वाइपर वॉल इज डूइंग सो मच फॉर द साइड ऑफ NYX. जस्ट लुक एट दैट वॉल. अगर आप रबल की तरफ से रोटेशन देके ट्री में जाते हो आफ्टर ओपनिंग दैट डोर, यू डू नॉट नो व्हाट इज ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल. You will probably be just walking into a setup that you might have absolutely no idea of, and it also gives them the control of the B main. क्योंकि अगर वहां से वॉल डाउन होगी, you have snake bites, you have neon stun, you have KJ nano swarm as well. But Viola takes 2 of them out. The swarm coming in from her weapon, the spectre, the burst, insane. डोर का कंट्रोल अब पूरा जीई के पास आ चुका है एंड उनकी रोटेशन सीधा ए की तरफ आती है. हाइट हाइट का इस्तेमाल हो चुका है. दे फाइनली मूव फॉरवर्ड. दे विल बी लैंडिंग इनटू द साइड बट दे माइट नॉट नो कि शनोबू वहां पे वेलकम करने के लिए है. शी इज प्लेइंग बैक ऑफ द साइड एज ऑफ नाउ, वेटिंग फॉर हर टीममेट्स टू अराइव एंड कमिंग इन फ्रॉम द मिड. देयर वी गो ब्लेड स्टॉप टिंग शनोबू लेते हुए अपने लिए. म्यू विल हैव टू प्ले इन फ्रॉम द बिहाइंड बट सीधा ट्रेड उनके फेवर में आता हुआ जी shutting the entire defense down of NYX. जो starting में उनके लिए काम करा वो इस टाइम पे नहीं. And the way they just held on to it. बायला ने वो पूरा play setup किया. Yeah, I agree with you. Scared. The way they played, the way they dominate, the way they strategize, the way Baila get the 2 frags with a Spectre. You can say that was awesome. That was a clear-cut round. You can come. You can tell. You can say that ki the momentum, the time, you can say that is the patience, you can say it is the main feature, or you can say the main key of this game right now. Muffin Loop जरूर push करने का एक डिसीजन रखेंगे बट लेट्स सी वो अपने डैश को इस्तेमाल करेंगे कि नहीं. आई होप तो नहीं करेंगे बट दैट वॉल फ्रॉम वाइपर, दैट इज सम काइंड ऑफ बीस्ट वॉल बिकॉज पुश भी नहीं कर पाते एंड उसके साथ साथ वो मोमेंटम भी ज्यादा नहीं कर पाएंगे. बट अगर मैं बात करूं ग्लोबल ई स्पोर्ट्स की तो वो जरूर बिखरे हुए हैं अभी मोमेंटम पे, क्योंकि 2 प्लेयर्स हम लोग को ए के बाहर देखने को मिल पाएगा, एक प्लेयर बी के बाहर और एक प्लेयर सी के बाहर. राइट. मफिन लूप अकेले सी के बाहर होल्ड करे क्योंकि जब भी टाइम मिलेगा वो फटाक से एक फ्रैग सी से लेके वो दूसरे साइड पे ये करेंगे. बट उनके सामने एक डोमिनेंट प्लेयर खड़े हुए हैं ब्रीच, जिन्होंने बहुत सारे फ्रैग्स खुद से लिए हैं. शिनोबी जरूर सा पुश करेंगे बट मफिन लूप, दैट वाज अ क्लियर कट हेडशॉट कमिंग फ्रॉम मफिन लूप. लेट्स सी वो कैसे करके बाकी के शॉट्स लेते हैं. शिनोबी को जरूर वो ले सकते हैं. दैट वाज क्लियर शॉट बट मफिन लूप दूसरा फ्रैग जरूर लेंगे एंड लेट्स सी कि कैसे करके मैचेस को निकालते हैं. दैट्स अ 3v5 का सिचुएशन बन चुका है एंड देखने को मिल पाएगा कि वो कैसे करके एलिमिनेट करेंगे अपने प्लेयर्स को. बट राइट नाउ यू कैन से दैट कि मफिन लूप जरूर अभी होल्ड कर रहे हैं. हाईफे जरूर प्लान करेंगे सी साइड अपने हाथों में लेते हुए. हार्बर जरूर पीछे के साइड्स पे जाएंगे. प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन फॉर द टीम ऑफ डिफेंडर्स बट लेट्स सी कि कैसे करके अपने हाथ में लेते हैं. आनिया के ऊपर जरूर बनेगा तीसरा फ्रैग अपने हाथ में मफिन लूप. व्हाट अ डोमिनेंस बट हाईफे चौथा फ्रैग जरूर लेंगे एंड मे बी अ 4th किल कमिंग फ्रॉम. बट नहीं, बायला जरूर पीछे से आके go frag out करेंगे. That's a flawless round for the attackers. That was an amazing round for the attackers. What you say? Scared. That was an insane play, just as you said, and this had to bring the timeout no matter what. I was expecting NYX to take this timeout as of now, क्योंकि उन्होंने 2 setups की अभी तक ट्राई कर लिया है and दोनों ही setups के around we have seen Global Esports just winning that trade off. तो GE Phoenix doing a really well job in adapt.
disrupting into the walls that are being put by Shinobu. I honestly feel like that Shinobu should have won that trade against Muffin, but Muffin just getting ahead, making sure to just get down, crouch, and then was able to just finish Shinobu off. Was just trying to do a jiggle play and was not able to get the shots onto the head. So that was one Right. play that I personally feel like might have changed the outcome of the entire round. अगर कहीं ना कहीं शिनोबू उस फाइट को जीतती तो सी साइड का कंट्रोल उन्हीं के पास रहता. इट वुड हैव बीन अ 1-for-1 ट्रेड एंड लुकिंग एट द वॉल दैट वाज सेट अप, सी पे वो अकेले एंकर भी कर लेती. हैज द स्नेक बाइट्स एंड वुड हैव आल्सो हैड द स्मोक ऑर्ब, सो would have been able to hold that side and उसकी टीम को प्रायोरिटी मिल जाती बाकी दो साइड्स पे, बिकॉज ओमेन मिड की साइड से रोटेट करती हुई काफी आगे तक जा चुकी थी एंड शी कुड हैव बैक स्टैब्ड GE के पूरा लाइनअप हैड दे चूजन टू मूव अगेन टुवर्ड्स द ए साइड. तो वो एक प्ले मेरे हिसाब से होता तो पूरा राउंड चेंज हो जाता, बट वो नहीं होती हुई दिखी है. एंड फिलहाल अभी देख कैसे सिचुएशन चेंज होने वाली है, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी द 5th राउंड ऑफ द मैच. And right now, look the aggressive play from the entire team of NYX to came in. Rubble का कंट्रोल भी उनके पास है. या व्हाट डू यू से दैट कि जो अग्रेशन हम लोग को इको राउंड पे पिछले मैच में भी देखने को मिल पाया था, वो राइट बिफोर इस मैच में भी देखने को मिल पाया, बिकॉज इट्स अ इको राउंड, राइट. अगर मैं बात करूं इको राउंड पे तो एक फ्रैग जरूर बायला ले सकते थे. दैट्स अ क्लियर कट हाई पे, उस पीछे से जरूर कवर अप रहेंगे. दूसरा फ्रैग फॉर द हाई पे, बट breach from the defender. What a gameplay coming from you. The 2 frag with the sheriff. The you can say the sheriff god. You can say कि कैसे करके breach इस मैच में खेल रहे. That's a beyond imagination. जैसे करके वो eliminate कर रहे हैं. That's pure. You can say from Mu16 के you can say वैंडल के साथ वो जरूर होल्ड कर रहे हैं. मुफ्फिन लूप जरूर उनके पास भी वैंडल रहेगा. एक 3v2 का सिचुएशन जरूर बन चुका है. एक इको राउंड है, एक बेहतरीन इको राउंड हम लोग को देखने को मिल पाएगा. बट लेट्स सी कैसे करके निकालते हैं. बट मफिन लूप के साथ साथ Mu16 के एक डबल एलिमिनेशन के साथ साथ जरूर इस राउंड को अपने हाथ में लेंगे. एंड बेहतरीन राउंड फ्रॉम बोथ साइड यू कैन से, क्योंकि एक नाइस ट्राई मैं बोलना चाहूंगा फ्रॉम द साइड ऑफ डिफेंडर्स. एक अच्छा इको हम लोग को जरूर देखने को मिल पाया है स्केयर्ड. Right, and I really want to see कि ults अब किस की क्या आ गए हैं, because we're seeing 4 ultimates already ready for the members of GE. They have the neural theft, they have the rolling thunder as well, 2 amazing utilities to make sure that they have the entire information of the position of the opponents as well as the control of the entire side. But we are going to see rotation coming in from B side. Oh no, he's stunned. Oh, India comes out on top, punishes the aggression of Mew, and now they have to play behind. They're not able to plant this guy. They are actually planting it now with the cover of Ko, but there comes an aftershock. That was a very well timed kill, but Muffin uses the updraft, tries to go back, high pitch, just not stopping, he's still fighting. Roxanne comes in with the trade, Shinobu has been taken down, it's Rose. Still surviving, still standing strong. They have planted the spike. It's a 2v3 scenario yet again. Cascade used up. Omen smokes coming in, that's a good one. However, they still have to clear this angle. And we're not stopping his third. And goes with the final shutdown. Yata not being able to survive that one. Another insane afterplant setup from the side of GE. Right. Sorry to interrupt, Scared, but the way they are playing, the way defending are playing is too good, right? This is the first team that got the first 2 rounds, right? The pistol round and also the second round. But अगर मैं बात करूँ, the aggression they have put in, the way of playing of breach in the defender side is too good. थोड़ा सा maybe मेरे हिसाब से they should take a time out and think before doing the next stage. But right now you can say Muffin Loop is pushing, right? नहीं, पुश जरूर वो नहीं करेंगे इस टाइम पर. उनको पता है कि ज्यादा अगर हम लोग एग्रेशन पे जाएंगे तो दिक्कत आएगा. पीछे के साइड पे जाएंगे, ओमेन का स्मोक के साथ साथ वो जरूर पीछे के साइड पे जाएंगे. ओमेन विद द कवर, बट नहीं, मफिन लूप द फर्स्ट फ्रैग ऑफ द फर्स्ट राउंड. लेट्स सी कैसे करके वो निकालते हैं. मफिन लूप जरूर एग्रेशन पे रहेंगे. उनके सामने केओ जरूर रहेंगे, उनके बैकअप पे जरूर केजे हम लोग को देखने को मिल पाएगा फ्रॉम द डिफेंडर साइड.
मफिन लूप थोड़ा सा धीरे खेलेंगे, उनको पता है कि ज़्यादा एग्रेशन पे अगर वो लोग जाएंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है मियो 16 के। ज़रूर ए साइड पे इंतजार करेंगे एंड नाउ बायला ज़रूर एक प्लेयर को डाउन करेंगे, दैट वाज कीजी एंड देखने को मिल पाएगा कि वो बाकी के प्लेयर्स को कैसे करके एलिमिनेट करते हैं। दैट्स हॉरिबल टर्निंग पॉइंट बिकॉज अभी भी की बात करूं तो मियो 16 के स्टिल होल्डिंग द ए साइड एंड इसके कारण वो दोनों नहीं निकल पा रहे फ्रॉम द साइड ऑफ ए साइड। और एक फ्रैग हम लोग को जरूर देखने को मिल पाएगा फ्रॉम द साइड ऑफ हाइप पे, देखने को मिल पाएगा कि वो कैसे करके बाकी के प्लेयर्स को निकालते हैं। दैट्स अ सिचुएशन ऑफ 5v2, लेट्स सी कैसे करके निकालते हैं, बट फ्रॉम द साइड ऑफ डिफेंडर्स प्यूरोटो एक फ्रैग को निकालेंगे एंड देखने को मिल पाएगा कि वो दूसरे फ्रैग को कैसे करके निकालते हैं। मफिन लूप जरूर पुश करेंगे एंड मे बी दे कैन टर्न इट आउट एंड मफिन लूप दूसरा फ्रैग निकालते हुए एंड इसके साथ साथ बायला को भी डाउन किया गया है फ्रॉम द साइड ऑफ किनोबी। जरूर इस टाइम पे वो सेव करेंगे, उनको पता है कि ये सेव राउंड अगर नहीं रखेंगे तो दूसरे के लिए प्रॉब्लम रहेगा, बट मफिन लूप इज लाइक नहीं, मैं करने नहीं दूंगी तुमको एक भी सेव, व्हाट यू से स्कैर्ड। जस्ट वन प्रॉब्लम आफ्टर द अदर। फिलहाल अल्ट का राउंड उनके लिए होने वाला है बिकॉज अपार्ट फ्रॉम रोलिंग थंडर उनके पास सारी यूटिलिटीज रेडी हैं। दे डू हैव द वाइपर पिट एज वेल, तो काफी ज्यादा चांसेस है कि वाइपर को वो शायद ए पे छोड़ सकता है उस साइड को एंकर करने के लिए, जस्ट ड्रॉपिंग दैट पिट एंटायरली इन टुवर्ड्स द एरिया ऑफ द ए मेन. So they will have that control and they can just move forward towards C side or B side. But we might see another fast hit coming in. Muffin Loop, Bilal will not be able to get the finish off, will be traded off. Yata takes one down but will not survive the burst. And there we go, the weaponry advantage has been so very quick. Mew with three of them. What the heck? What was that? What was that, man? Ooh, the spree. The style of spray was so good. Right now we can say that scared Muffin Loop on the frag of 11, right? 11 kills, and on the side of the defenders you can say it's breach. We know because the way of dominance we can see from the side of defenders. Whoa! I just get to know about that defenders had no duelist. Yeah. Welcome to the new world, and we probably are seeing the reckoning coming in. We are seeing the nano swarm used up, but उसके बावजूद respect बिल्कुल नहीं की गई है. We are still seeing 47k moving forward, but Baila with 3 trades in this round. What is she doing? Though because she might actually get the ace in this one, but we'll have to see. Muffin still wants to go in for that trade-off. A little bit of the head, but Taipe is the one who shuts Anya down. Anya not surviving this one. And this should probably be the cue for Shinobu to just save this one. But I think so. Global Esports, they actually might want to go in for the hunt. And Shinobu शायद ये survive ना कर पाए. पहला contact उनका hype के साथ बनने वाला. No, and that's gonna be Baila takes the one down, 4th in this round. Another flawless for GE Phoenix, and this is the 7th round on their defense that on their offense that they've actually taken, not defense. I mean, it's so they've been so on point with that attack. They just do not stop at all. They have been so on point for the entire series that we've seen tonight, in the previous 2 games as well, and in this one too. They have not stopped. Yeah, I agreed with you, right? Like the way of playing of G is still so good that we can say right now, coming back to the match, we can say Muffin Loop still pushing, maybe getting 2 frags. नहीं, थोड़ा सा जरूर प्रॉब्लम बनेगा, बट याता जरूर एक टैप लगेंगे मफिन लूप को, बट लेट्स सी कैसे करके वो बाकी के प्लेयर्स को एलिमिनेट करते हैं. मे बी 7th नहीं कमिंग, बट लेट्स सी कैसे करके निकालते हैं. दैट्स अ प्रेडिक्शन, मे बी, आई डोंट नो, बट म्यू 16 के स्टिल होल्डिंग द सेम, स्टिल होल्डिंग द ए साइड, पर उनके साथ साथ हार्बर जरूर आ चुके हैं. शिनोबी, उनको पता है कि प्लेयर्स कब आएंगे, पिरोतो को जरूर निकाल पाएंगे. एक बेहतरीन स्प्रे के साथ, एक वैंडल स्प्रे के साथ डाउन करेंगे ब्रीच को. एक बेहतरीन गेम प्ले हम लोग को जरूर देखने को मिल पाएगा. म्यू 16 के स्टिल अग्रेसिव बनना चाहेंगे ये साइड के ऊपर, अपना स्टन जरूर डालेंगे, मे बी फ्रैग आउट निकाल पाएंगे, बट हाई पे जरूर दूसरे साइड से आके डाउन करेंगे. दैट्स 2v3 सिचुएशन. लेट्स सी, 2 अल्टी अभी भी बाकी है, अल्टीमेट कमिंग अभी भी बाकी है फ्रॉम द साइड ऑफ डिफेंडिंग, बट लेट्स सी कि उसको कैसे करके यूज करते हैं, कैसे करके अपने हाथ में वो
जो है अपने हाथ में वो राउंड लेंगे एंड लेट्स सी कि कैसे करके इसको एग्जीक्यूट करते हैं। U16 के स्टिल एक अच्छा जगह होल्ड कर रहे हैं, मे बी they gonna push or Man, not, or maybe what? they're gonna be late, but what's gonna happen? There's something, the say of coordination, the proper coordination, the proper combination, the deadly duo, we can say, the Hi-Fi and the Mu16 frag out the both of the players. Perfect round coming from Global Esports. The backstab was just insane, and the sad part is that no command was also used by Yata. तो वो भी problem में अब आ चुके हैं, because now they will have that utility to enter this one round either, and it's an 8-2 scenario right now. The best it can go for NYX is 4-8, and that is if they manage to defend for the next two rounds. Rito using the fault line, just clearing that area, making sure that their team has control. Fragment coming out, but a quick rotation from Muffin does not stop at all. GE with another trade-off. We see reloads coming in. Muffin, another spray, and that's gonna be two members taken out of the picture. Another flawless one for GE. That was a clear cut. You can say a quick round we have seen right before, right? Right now, Muffin Loop, the way she's playing the duelist is beyond imagination. The mind-blowing gameplay coming from Muffin Loop and the rest of the players, because you can say on the side of defenders, Breach is still gonna there playing right before. They don't have duelist. On the side of attacking, they're gonna have some problems, maybe. What you say? Scared. I honestly expected them to, have a good defensive, just because, as you pointed out, they do not have any duelists, and that is going to be another trade coming in. Yata making sure to set two of them down, but you might see another move coming in. They will probably try to capture the members of GE in towards that mid. Viper Pit उन्होंने C पे use कर रही थी just to deny any kind of entry, and now they have to get the rotations in. Mew was taken out, drops in finally with the trade off. Rito also takes Rose down. Breach counterpart, and they can actually get the defuse in. They're sticking to it. Baila has to move, tries to go in for the spam, but the cage is right there, not able to stop it, and that is going to be a 9-3 half. Baila with the trade gets one, was shut down after that, and another 9-3 half that we are seeing in this map in Lotus, and we're gonna see the timeout coming in as well. At this point, Dungeon, I really feel like they have to play in aggressive in towards that attack half. But looking at their composition, they don't have the tools to go in so aggressive. They've got the tools to, I would suggest, gain the information and then play along with that information. तो शायद NYX को दिक्कत आ जाए. शायद, because now the switch, the most critical part for the NYX, because उनके पास कोई duelist नहीं है, because duelist नहीं है तो they can't simply get the site. Yeah, it depends upon the utils. You can say अगर breach stun कर दे, अगर उस time पे flash आ जाए, the way Viper will wall, it depends. But yeah, the presence of duelist in any in the site of attacking makes the momentum, makes the way of gameplay will be better, right? Like थोड़ा सा अगर पुश का भी बात करूँ तो पुश करने में भी थोड़ा सा जो है एक मोमेंटम, एक एडवांटेज रहता है अगर एक डुअलिस्ट रहता है. डुअलिस्ट जो बनता है उसके पास एक एग्रेशन रहता है, द वे ऑफ एग्रेशन, द वे ऑफ किलिंग पीपल. वो थोड़ा सा मे बी मेरे को बैक ऑफ द एंड देखने को नहीं मिलेगा इस टाइम पर फ्रॉम द साइड ऑफ attacking right now. But if you can say the way of play in a breach of the attacking, you can say Papito, it's still good. 10 frags with a breach, the way they played is still good. The way they got the first pistol round is it's beyond imagination. But let's see कि इस round में क्या होने वाला है. अग्रेशन तो दोनों साइड से दिखाई नहीं दे रहा है. अग्रेशन हाँ 8 साइड से थोड़ा सा हम लोग को देखने को मिल पाएगा, जहाँ Mu16 के थोड़ा सा अपर एज पे खेलेंगे. साइफर का केज में भी डिटेक्शन हम लोग को देखने को मिल पाएगा कि नहीं पता, बट दैट्स अ 4v4 सिचुएशन. बट लेट्स सी कि कैसे करके निकालते हैं. परपीतो विद द फर्स्ट फ्रैग. लेट्स सी कि कैसे करके बाकी के प्लेयर्स को निकालते हैं. स्टन का इस्तेमाल जैसे मैं बोल रहा था करेंगे.
बट उस टाइम पर मे बी फ्रैग आउट कर पाते थे, बट लेट्स सी कि कैसे करके अपने इसको निकालते हैं। Anya with a second frag of Mio 16k, but Muffin Lu with a headshot of Sheriff। देखने को मिल पाएगा कि वो कैसे करके मैचेस को निकालते हैं with a 2v2 सिचुएशन। लेट्स सी कि कैसे करके इस मैचेस को अपने हाथ में लेते हैं। मैच कभी भी किसी टाइम पे घूम सकता है बिकॉज म्यू 16 के स्टिल सर्वाइविंग एंड ब्रीच का एचपी भी बहुत लो है। कैसे करके निकालते वो देखने को मिल पाएगा। मफिन लूप विद अ क्रिस्पी हेडशॉट विद अ थर्ड फ्रैग। मफिन लूप ओएमजी द शेरिफ बीस्ट, यू कैन से द वे ऑफ प्लेइंग ऑफ मफिन लूप इज स्टिल गुड। व्हाट डू यू से स्केयर्ड? The way they just baited, that was absolutely insane. G के एक member just made the noise that they're running away, and Muffin was just staying in that one corner because she knew कि spike सामने है. They will have to come and pick it up. And NYX members, hearing those footsteps, hearing those sound cues, thought that शायद G के players rotation पे जा चुके हैं, and उसी चीज का एक फायदा जो उठाया है Muffin ने, that was insane. The mechanics of this team. I mean, like, hats off at this situation. However, this we're seeing the double-digit score coming in from G yet again, 10-3. The scenario is, but NYX, looking at how they played those first two rounds, I personally feel like they still have the potential and they can actually do that. उन्हें बस अपनी वो duels जीतनी है कुछ भी करके, and they have to take the duels in the scenarios जहाँ पे उनके लिए वो profitable हो, उनके लिए एक advantageous situation हो, because as we have been talking about, the lack of duelist is going to be so very problematic for them in these attack rounds, क्योंकि you can use the utility. Yes, you're absolutely right. But जितनी जल्दी एक duelist उस पे follow up देता है, उतना जल्दी बाकी और कोई एजेंट शायद ना दे पाए, तो वो प्रॉब्लम्स अभी उनको फेस जरूर करनी पड़ेंगे। बट फिलहाल we will have to see how they're going to play in their save round, because we're seeing a Marshall coming in from G, we're seeing a Judge as well, and close angles being held up. Fault line used up, but Cascade just stopping any kind of tracks after shock used up, and Judge को लेके corner में जो थी Mew made sure to take two of them down to punish them for the aggression, using speed up as well, and Baila just supporting her from behind. They both take everyone out, and that is the 11th round for GE. That's a clear cut round, man. That's a simple quick round because of Mew 16k shotgun. With the way she uses the Judge as something that made the round so quick and so simple, because जैसे करके वो लोग push कर रहे थे, and as you have said before, the duelist, no duelist can harm the rounds, because हाँ बिना duelist पे अगर वो defend कर रहे हैं, that's the advantage. But if it's going to be attacking, that's gonna be a problematic. The next round has been started. Let's see कि कैसे करके execute करते हैं from both the teams, but let's see कि कैसे करके इस matches को अपने हाथ पे ले सकते हैं कि नहीं पता। बट अभी के लिए ओमेन जरूर एक इस साइड के बाहर जरूर होल्ड कर रहे हैं मफिन लो, बट अन्या यू हैव मिस्ड इट, एंड मफिन लो इसका एक अच्छा फायदा लेते हुए जरूर फ्रैग आउट करेंगे अन्या को। बहुत ही बेहतरीन एक फ्रैग हम लोग को देखने को मिल पाएगा। एक 5v4 का सिचुएशन हम लोग को जरूर देखने को मिल पा रहा है इस मौजूदगी पर। ओमेन स्मोक का इस्तेमाल करेंगे, उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम जरूर बनेगा। वाइपर का वॉल जरूर डाउन आएगा Mio 16 के अगेन विद अ जज। लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन, बट what gonna happen? This is what? This is insane. Mio 16k again with the 2 frags, and Byra with again Spectre उसके पीछे रोज जरूर स्पेक्टर का इस्तेमाल करके राउंड को निकालेंगे। क्लीन क्लियर शॉट फिर से Mio 16 के साइड से हम लोग को देखने को मिल पा रहा है। द वे ऑफ प्लेइंग, द वे ऑफ स्टाइल दे हैव प्लेड बिफोर एंड आफ्टर इज बियॉन्ड इमेजिनेशन। द यूज ऑफ judges, the places, the positions is still so crystal and clear that made me so energetic about playing with the judge, right? Scared, what do you say? I have absolutely no idea what Mio 16k has had in that break time before match number 3, because she is playing insane. Paranoia connect हुआ था, उसके बावजूद she was able to take both of them down, but फिलहाल माउंट की तरफ फाइट होती हुई बायला takes one down, has been traded off quickly. Purito will be able to get the weapon upgrade, Roxine को दिया है फिलहाल, and there we go, smoke coming in as well just to deny the vision, but Anya playing with the AJ turret. Nano Swamp भी यहाँ पे use करेंगी so that the plant can be
Placing swarm grenade. Done that successfully without any major problems. But there we go. Cascade coming in. We can clearly see a quick rotation. And there we go. Overdrive comes in. Muffin takes the trade. And they will quickly just jump in with the defuse. This is the match point. They have to stop this defuse no matter what. Taipei is not going to stop. Takes them all out and takes the round 13 for her team. Global Esports Phoenix table toppers 13-3 in the last game. That's a GG coming, right? It's a good game. That's a good gameplay coming from the team, from the both of the team. But it's a nice try to the team. You can say XYZ, because the way of playing they have played is still kind of lacking, because थोड़ी देर पहले जैसे करके वो लोग खेले थे, थोड़ा सा लैग जरूर किए थे, डिफेंडिंग पे जरूर वो एक अच्छा मोमेंटम लिए थे, बट आफ्टर दैट दे हैव दे डिड नॉट शो the way of playing, right? I think you are getting it scared. Right. I mean, they were having ideas. Then their ideas were correct. उनके read भी बिल्कुल सही थे. But the Yeah. only place where they kind of lagged was the follow-up in that department. And अगर वहीं पे उनके पास एक duelist होता, they would have been able to make those cheeky plays, those quick rotation, those the quick maneuvers that they have. They were also caught in the pincer maneuvers that were coming. They were having some troubles coming in that one, but even after that, they put up a great competition, and that was a fun game to watch. That was so enjoyable, to be honest, seeing all these girls playing in, using their utilities with their combos, absolutely perfect. But at the end of the day, it is going to be a great day for Global Esports Phoenix, as these girls will be topping the table, and now they will be moving in towards the upper brackets of the brackets round stage that we will have after a few days. But for now, that is going to be it for day number 1, guys. Thank you so much for joining us, and that has been an amazing evening. Thank you so much for joining us as well. Dungeon, you have some words for the evening and you want to call it off? Yeah. It was a clear-cut, amazing evening. We have said, like, the way of playing from global esports, the way of playing of the opponents from the global esports. That was awesome. That's a nice try to the teams, and you can say that the way they have played, they can still learn from their mistakes and come back harder. Till then, see you soon. To the next matches that are gonna happen in a few days, right? Till then, subscribe to our Absolutely. channel and also follow us on our Instagram. This is Denjion and with me, myself, that's Scared, signing off for today. Bye.